Okay, so we have seen this. We need to test the special characters. Now let's see very long strings. For name or any other string, pass in a very long string in the payload and check the API response. The API should not allow a string that is greater than the column size in the database. Okay. Next, invalid method. Use post instead of put and check if the API responds to the request. The API should throw an error if the endpoint does not have the required access method which is given in the API documentation. ठीक है. अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, मतलब क्या होता है कि जो आपकी पोस्ट, आपकी पुट और अपडेट और पैच, ये सारी जो मेथड्स है ना, ये एक ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं. एक मतलब जेनरिक, जैसे मेरे को भी एग्जैक्टली उसका देखना पड़ेगा कि क्या होता है, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इंटरव्यू में. कि अगर मान लो मैंने अपडेट की जगह पोस्ट कॉल कर लिया या अपडेट की जगह पुट कॉल कर लिया, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, एरर आएगी क्या? तो कुछ केसेस में आती है और कुछ केसेस में नहीं आती. क्यों नहीं आती? क्योंकि मान लो अगर पोस्ट एक बड़ी बकेट है, बिग क्लास है, और उसी की चाइल्ड है मान लो पुट. अभी अभी अपन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो डेटा देखना पड़ेगा. पोस्ट के अंदर ही अगर पुट आती है तो आप पोस्ट कॉल करो चाहे पुट कॉल करो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट. वो एरर नहीं देगा, वो वर्क करेगा. ठीक है. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. जब आप टेस्टिंग करो तो ऐसा मत करना कि आपने पोस्ट की जगह पुट कॉल कर लिया, वो वर्क कर गया एंड यू आर क्रिएटिंग अ बग. ठीक है, वहां पे आपको पहले खुद का नॉलेज वो करना पड़ेगा, इंक्रीज, कि भैया वो सेम क्लास तो नहीं है, मतलब एक ही क्लास को तो बिलोंग नहीं करती. राइट. सो यू शुड कीप दैट इन माइंड. नेक्स्ट है इनवैलिड वैल्यू. फॉर इंटीजर्स वैल्यूज पास इन डेसिमल वैल्यू. इंटीजर वैल्यू पास इन डेसिमल वैल्यू मतलब कि जहां पे एज, फॉर एग्जांपल एज अगर आप सामने वाले व्यक्ति से ले रहे हो और वो भी आप इंटीजर वैल्यू में ले रहे हो कि भैया 18 है या 19 है या 20 है ना. एज आपकी ईयर एंड मंथ होती है. 18.5 या 18.6 नहीं होती आपकी एज कभी भी. राइट. तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जहां पे हमको इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रही है एपीआई, वहां पे आप डेसिमल वैल्यू डाल के देखो. लाइक 18, अगर उसने एज पूछा तो आप 18.5 डाल के देखो. फॉर बुलियन वैल्यू पास इन अ स्ट्रिंग लाइक डबल कोट ट्रू. मतलब देखो ये वैल्यू तो ट्रू बुलियन ही है, बट आपने डबल कोट जैसे डाला तो नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग. You can be more creative in finding issues since all these values will end up in database at the end of the day if the operation is adding the values to the database. Okay. Incorrect data types. Instead of integer, pass in string values and check the API response. The API should throw an error appropriately. Empty data and object. Pass in an empty JSON object as a payload and check the response. Also, pass in an empty string to check the API response. The API should not allow these inputs. Empty strings will ultimately end up in the database if the operation is adding the data. Required fields. Remove the required fields from the payload and check the API response. The API should show appropriate error messages if the required fields are missing. Null. Send null as values in the payload and check the response. The API should show appropriate error messages. Redundant fields. Pass in redundant fields such as fields that are not required. Also pass additional fields that are not in the definition of the payload and check the response. The API should not allow additional fields. The redundant fields, if not in the definition, should not be allowed. Delete already deleted entity. Okay, this is more specific to the delete method. Once an entry is deleted from the database, hit the same API again and check the response. The API should respond with a message that the entity does not exist. This is more of an implementation detail that you need to check for the delete endpoint. Duplicate check. For add operation, you should check if the duplicate check is enabled on the API endpoint or not, based on the business requirement. For example, the email ID and the phone number should be unique for contacts. You also need to check if the update operation is duplicating the record in the database. मतलब एडिशन के टाइम पे तो चेक करना ही है और अपडेट के टाइम पे भी चेक करना है कि भैया डुप्लीकेट एंट्रीज क्रिएट तो नहीं हो रही डेटाबेस में. Response body. The response body is the validation of the expected data based on the input, which is called the actual data. A response can be big in size as well, so you need to make sure that it is handled properly by the given API.
Actual data versus expected data. Let's say you are requesting a list of contacts. The response would be having a list of contacts with the fields based on the API definition. Limit, size, pagination, sorting. You need to make sure that the API returns the data in the specified format. There is also pagination. The size of the response should also be checked since it directly impacts the performance of the API. API version testing. This category contains backward compatibility tests. If the endpoint changes, the old one should not be removed, but when the user hits the old endpoint, it should redirect to new endpoint. अच्छा, ये समझ में आएगा किसी को ये वाला पॉइंट, एपीआई वर्जन टेस्टिंग? ये पूछते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट है internal versus external APIs. APIs that are not accessible to the external world are called internal API. As a part of a standard testing practice, you need to make sure that the internal APIs are not accessible by outside the world. Outside world, there should be an IP whitelisting of the internal APIs, those outside the list, and the APIs that are inaccessible. APIs that are exposed to the external world ought to be consistent, secure, and scalable based on high usage. It is also good to monitor the external API, find out the usage patterns, and draw up testing guidelines accordingly. For example, if the external world is frequently fetching the list of contacts, then you need to make sure that the performance of the API is good enough. And if the external world is interested in deleting something, then the copy of the data must be preserved or not based on the geolocation laws. The definition of the external API should never change. That is, the test should never fail in ideal conditions. But if they fail, it will be a P0 and must be fixed immediately. You can also pick up beta testers from the API consumers and ask them to help with the test reviews. For external APIs, security testing should include test for SQL injection, remote code execution, and such. Consumer-driven contract testing. CD/CD applies to external APIs. They are often services offered by vendors to the external world, like weather or currency conversions. The definition of the API becomes the contract, and the consumer drives the testing of these APIs. Consumers add the test automation and share the same with the vendor. The vendor in turn runs these tests as a part of CI/CD pipeline, and any red flag is taken seriously and must be fixed in a few hours, if not minutes. That's a CD/CD, consumer driven contract testing. This is also very important interview question. इसमें क्या होता है, जैसे इसके एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें. कोई पेमेंट वेंडर है, स्ट्राइप, वर्ल्ड पे, ये या जीरा भी फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं. इन लोगों ने अपनी कुछ एपीआईज को पब्लिकली कर रखा है, पब्लिकली पब्लिश कर रखा है ना. अगर कोई भी व्यक्ति इनकी एपीआईज को कॉल करना चाहे टू डू एनी काइंड ऑफ पेमेंट और टू वर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट, अगर जीरा का एग्जांपल लें अपन, तो किसी प्रोजेक्ट में अगर आपको कोई चेंजेस मेक करने हैं, तो यू कैन कॉल दोज एपीआईज एंड यू कैन मेक एनी चेंजेस दैट यू वांट टू डू, राइट. पेमेंट के केस में पेमेंट परफॉर्म कर सकते हो और टेस्टिंग कर सकते हो कि भैया इनवैलिड कार्ड से पेमेंट तो नहीं जा रहा है, राइट. तो ऑब्वियसली आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा उन लोगों के उन वेंडर्स के साइट पे जाके अपने आप को, तभी आप उनकी एपीआईज को यूज कर पाओगे, एक्सेस लेना पड़ेगा तभी यूज कर पाओगे. तो इनकी जो एपीआईज है ना, ये बाहर की पब्लिक यूज करती है. जीरा के या जो भी पेमेंट वर्ल्ड पे है, उनके इंटरनल लोग यूज नहीं करते उन एपीआईज को, बाहर की पब्लिक यूज करती है. तो ये सीडीसीटी वाला कंसेप्ट वहां पे काम आता है, ठीक है. क्योंकि आपकी एपीआई जो आप क्रिएट कर रहे हो उसको कंज्यूम कौन कर रहा है, बाहर वाले लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं. तो अगर कोई भी इशू आया, भले माइनर इशू आ रहा है उसमें, तो वो एकदम बिल्कुल अपने को पहली प्रायोरिटी पर से फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बिजनेस लॉस और अपनी रेपुटेशन लॉस वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा वहां पे, ठीक है. Next, importance of negative testing. Negative testing is a very important part of API testing since it exposes weaknesses in the API implementation. It is suggested to do enough negative testing so that you get a clean user interaction and the user is not allowed to push garbage data into the application. Negative testing helps identify bugs that may crash the application. For example, in a file upload API, if the file size limit is not set, then the user may upload a large file which may end up crashing the application server. Another example is a shopping cart application that is allowed to set the product cost to 0.
Negative testing is particularly significant for domains such as banking, finance, and insurance, where if not done, the business may end up having varied legal issues with customers. Discussions of the testing approach is out of the scope of this book, but the tester should be diligent in finding all scenarios that may be threat to the business. API testing should be done thoroughly since it impacts the overall application, both the front end and the back end. In the event of poor API testing, the back end will have garbage data, which is not useful. If the response to the user input was not tested well enough, the front end will have issues if the user makes a mistake, intentionally passes invalid values, or enter garbage data. So that's it. We have completed our API testing checklist as well. एक चीज कवर करना चाहता था, मतलब बताना चाहता था यहाँ पे हाँ हाँ कि जो हम लोग पॉजिटिव टेस्टिंग करते हैं, so many of us maybe knows that this, but just wanted to highlight. So positive testing is called as happy path testing, and when we do the negative testing, when we perform negative testing, then it is also known as a fuzzy testing. So these two terms nowadays, like, it's popular in the market. So happy path testing means doing the positive flow or testing with the valid type of data is happy path testing or positive testing, and negative testing means testing with the unsupported or invalid type of data. That is called as negative testing and also known as fuzzy testing. फर्जी टेस्टिंग और हैप्पी पार्ट टेस्टिंग भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, मतलब मेनली। तो ये हैप्पी पार्ट टेस्टिंग मींस पॉजिटिव टेस्टिंग है और सिंपली नेगेटिव टेस्टिंग जो है वो फर्जी टेस्टिंग है। क्लियर हुआ भाई? हाँ, thank you Narasimha bhai. Okay, let me stop the recording.